how to perform this Anjana karma, etc. So we will be having a discussion on this Anjana procedure and some combinations of Anjana with special reference to the Mashi Kalpana, that many of us are not into that Mashi Kalpana and that we are using in a day-to-day life or in a day-to-day practice. Even the common men are using, or the Swastha is also using the Anjana as a part of cosmetic reason, right? So we'll start with that. So the contents of the paper will be the relevance, the introduction, and the queries that I have explained before. क्या करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कब करना है, all these questions will arise when we are going to do something. So that we will clear it today. Okay. And see, while practicing eye or ophthalmology, we are having a term called Kriya Kalpa, and in which we are going to perform some of the procedures in the eye. And again, the relevance is why we should do in, whether we should do it in the eye or whether we should do the kalpas for the eye. Again, there is a query. And why it is important? See, this is because of so many factors. Before the main topic, we should have an idea about these tissue contact time, bioavailability, etc. of the Anjana or the Kriya Kalpa that we are going to perform. Okay. So, these things I'm not going to explain. You know what is Kriya Kalpa and what is Anjana. We are going to anoint something in the Akshi from Kanin to Apang or from Apang to Kanin in the lower aspect, below the cornea, or in the eye above the cornea. Okay. So again, coming to the typical presentation. So these are our queries. The first question is, the patient is coming to our OPD and we are planning to do the Anjana. And whether it is possible to do the Anjana in Samavastha or Niramavastha. That should be our first question, right? So whether this Anjana can be done in Samavastha? No. Acharya has explained that out of these Kriya Kalpas, that is 3 by Charak, Vagbhat ne 5 ya to 11 tak bola hai, including this 4 basics plus the other Pinti, Bidalak, etc. and the separate or specific Kriya Kalpas like Avagundan, Avachurnan, Muti, etc. So the answer is, first we have to know whether the patient is in Samavastha or whether the patient is in Niramavastha. This should be our first question. And we will be doing the Anjana when the patient is in Niramavastha. This is rule number 1. After telling the basic rule of Niramavastha, again Acharya is telling you can do Anjana in Amavastha also if there is so and so symptoms. It is blindly, it is not like in Niramavastha. It is like if you are having the symptoms like that of in Shobha and Ashobha Akshipata, that we will come later. Okay, so basic rule is we should do Anjana in Niramavastha only. And whether we are going to do this Kriya Kalpa in the anterior segment or in the posterior segment. So clinically, if we are in our clinic, we are teaching our students or we are practicing the ophthalmology with the concept that we are going to divide the eye into that. Clinically the eye is divided into anterior segment and posterior segment. So as per the target, we have to select the Kriya Kalpa, and if we have decided that we have to do this Anjana, then whether it can be done in the anterior segment or it can be done in the posterior segment. All of you will be knowing, including the lens is in the anterior segment and behind the lens the whole area is in the posterior segment. So we have to strictly know where is our target, whether it is in the anterior segment or it is in the posterior segment. And this is very important because again there is a common rule for this Anjana, that is we are doing the Anjana in Shuddha Tanu and Netra Matra Shritamala. Okay, so we are going to do this Anjana in Shuddha Tanu. So if we are having an emergency situation and wahan hame
like we are having the concept of Sadhyo Vamana, Sadhyo Virechana, etc. Whether we are having the concept of Sadhyo Anjana. Sorry for Again, the interruption, ma'am. Yes. मैम एक्चुअली स्टूडेंट्स को थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं थी, तो मैं स्टूडेंट से ये बोलना चाहूंगा कि हमारी साइड से वॉइस क्लियर है और मैम की भी वॉइस क्लियर आ रही है, तो अगर आपके में अगर वॉइस नहीं आ रही है तो आप एक और नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू मैम। I'm clearly audible, no? हाँ जी मैम, यू आर क्लियरली ऑडिबल। Okay. So, continuing the presentation, we were discussing about the Sadhyo Anjana concept. Whether we can do this Anjana in this Sadhya concept, like Sadhyo Vamana and Sadhyo Virechana. My answer will be yes. In some conditions, we are having a concept of Pratisarana. So, likewise, we have to do certain Anjanas in a particular matter of time or clinical condition. We will be going for the Sadhyo Anjana, and there, जो हमारा classical concept is तथा अंजनम प्रयुंचीत कहाँ करना है? It should be done in Shuddha Tanu. So that is not practical in Sadhyo Anjana concept. Okay, and now we are going to treat after considering Amavastha, Niramavastha, after fixing anterior segment and posterior segment, and after fixing whether it should be done in the Sadhya condition or as a planned procedure. Okay. So next is the Ayurvedic concept of Anjana. Before going or before discussing any Kriya Kalpa, we should go through this function or how the Kriya Kalpa, Anjana, Ashyotana, whatever it is, how it is going to work. Then only you will be having the answer why it is done. Whether it is only for Akshi, Netra Matra Shrite Male. It is explained, okay, it is explained in Netra Matra Shrita Mala. And for sure the Anjana will be removing your Mala from Netra. No doubt in that. But whether there will be any bonus for your Anjana? Let us see the sloka. Gatva santi shiroghrana mukha srotamsi bheshajam urdhvagan nayane nyastam apavartayate malan. What does it mean? So you are going to instill or you are going to anoint or you are going to do the procedure of Anjana, and how it is going to work. It will reach all the sandhis of your Akshi. Okay, we are knowing that we are having 6 sandhis. Okay, the Twa sandhi, uske baad where it goes, Shiro, it is going to the head. Shiro grana mukha srotam sibheshacham urdhvagan nayane nyastam. If I am applying an Anjana in my Akshi, it will reach the Shiras, Grana and other Srotasas of the Shira, that is Urdhvajatru me. In Shalakya Tantra, we are having the whole part above the head. So in Urdhvajatru Gataroga, whatever it is, like Nasya, your priority should be Anjana also. That is why we are having Vilyadi Gutika. That is why we are having Anjana in other disorders, other systemic disorders like jaundice, etc. You just go and see the Vilyadi Gudika, this what it is, yoga today, whether it is explained that it can be done as Anjana. Swasthi karodi Anjana pananasyehi. Anjana, Swasthi karodi Anjana pananasyehi. And Vilyadi Gudika, all you know that it is explained in Visharoga Pratisheda or Visharoga Adhikara. And there also it is explained that you can go for Anjana if you are having this or if you are Visharta. And again, we know the concept of Srotra Srinkhadakam, right? And if you are instilling a medicine in Nasa, Nasaya Praniyamanam Aushadam Nasyam, it's okay. And it is working by going to or reaching Srotra Srinkhadakam Prapya. And here also, your medicine is going to reach Srotra Srinkhadakam. And what is the importance of Srotra Srinkhadaka? It is the common point of the 4 Srotasas, 4 main Srotasas that is included in your Shalakya Tantra practice. So why it will not work in Shiras and Urdhvajatru? Surely it will work through this principle. Gatva santi shiro grana mukha srotam sibheshajam urdhvagan nayane nyastam apavartayate malan. And बाकी जो हमने already discuss किया है,
Before going for Anjana, you should be having a clear-cut idea of Abhishyanta as the root cause of all the Akshirogas. You should know the Ama Nirama Vivechana. You should clearly know about the Ama Avastha in Koshta, and you are going to treat a patient only after assessing the Chayati, Kala, Kriya Kala, or you are going to assess the Vyadhyavastha of the patient. Without that, if you are going for Anjana, you will get a negative result, and then you should not blame the Anjana yoga or the Anjana procedure. It is your own galti, or it is your own mistake, because you made a mistake in assessing all these things before you are going to practice the procedure Anjana. Okay. And these things, you know, we are having so many targets, so many methods, so many ways of applying the medicines as per modern. And our Kriya Kalpas, or especially Anjana, Tarpan, Pudpak, whatever it is having a higher tissue contact time and bioavailability mode. That's why we are having a more good result, especially in the posterior segment. I'm not telling there is no action in the anterior segment, for sure it is there, but we are having an action in the posterior segment also. Okay. And this is a drug delivery system and all. You all will be knowing about this ocular drug delivery system, the traditional and the other methods, the topical routes and the parenteral routes and all. And in this, you should know about the transcorneal and non-corneal route of administration of the drugs and how it is going. That is why if we are going for Anjana after Tarpana and Pudipaka, then also it will work. And in some cases, see, we are having two groups of practice. In some, we will be having the Anjana even without, see, in her patient, it is not mandatory that you are going to do the Kriya Kalpa, Tarpana and Pudipaka. You may be winding up the treatment with Anjana, or you may be continuing the treatment after this Tarpana and Pudipaka also. So once the route is clear to the posterior segment, if you are going for some Anjanas, it will be clearly effective in the posterior segment, for example, in Doshantha and all. Okay. And we are having so many barriers for this drug absorption. We are applying Anjana, even if we are applying Amrit in our Akshi, we are having so many barriers. We have to tackle all these barriers, and for that we are having some tips how we are going to tackle all these things. This ocular barriers, you will be knowing about this aqueous barrier, retinal barrier and all. I'm not going into that also. Then dynamic barriers like this reflex lacrimation, blinking, etc., etc. Let us keep. And again, kab dena hai. See, in every procedure, we will be having a group of indications, contraindications, etc. that will be explained in your classical textbooks and all. We have to follow that. But we should have a common sense before completely or blindly doing something in a patient. We should clearly know about this Kshanadi Kala and Vyadhyavastha. Again, if you are not having an assessment over this, you are going to lose the upper hand in the treatment. Again, you are not supposed to blame Anjana. Okay. In diurnal variations, see, we can do Anjana in the morning also, in the Dopar also, in the evening also, in the night also. At any time you can go for Anjana. But before going for Anjana, you should know whether I am going to do this Anjana for Vatika patient or Kabaja condition or the Spaitika condition, etc., etc. Again, I should know in which season I am going to do this Anjana. If it is a Varsha Ritu, now it is raining, and if I am having a planning for doing Anjana, I should not do it in a heavy raining day. And if there is sunlight in between this rain and all, I can go for Anjana. So in Varsha Ritu, I should do Anjana when there is sun. Okay. And again, in Vasanta Ritu, there will be Kaba Dushti. Daily Anjan to karna padega mujhe. Right. And if it is a Grishma Ritu, when there is a very severe ray of sun, then you are not supposed to do it in the middle of the day. Ulta, if you are in this Hemant or Shishir Ritu, you can do it in Madhyana. So this is a common sense. So in that particular day or in that particular week or in that particular month, you should have the common sense
that I'm going to do this Anjana for little bit of Shravana, and if there is any factor which is hampering this proper Srava of Mala from the Akshi, I am not going to get the proper result. Okay, and ये concept आपको मान में रखना है, and उसके बाद after this class you have to go and read the classics, both Ashtanga Hridaya, then Sushruta, Sharangadhara Sanhita, Yoga Ratnakara, Bhav Prakasha, whatever text available with you. Okay, in Yoga Ratnakara, etc., you will be having so many beautiful explanations how to do this, how to practice this Anjana and all. Okay, and obviously you will be knowing about Sharangadhara Sanhita, where these 7 Kriya Kalpas are beautifully explained. Okay, then coming to the Kriya Kalpa as per this Vyadhyavastha. Samavastha mein, this we have explained. In Samavastha, we'll be doing Seka Shodhana Pindi Bidalaga. Only in Niramavastha, we are going to go for Anjan, Tarpan, Putbag and all. Okay. Okay, so हमने confirm कर लिया, we are going to go for this Anjana. Okay. So coming to Anjana. Anatti anena iti Anjanam. We are going to anoint or spread something in our Akshi. That is called Anjana. Okay. And जैसे हमने पहले discuss किया, it is done when the Mala is in Netra Matra Ashrita and it is done in Shuddha Tanu. See, this is very, very important in case of an elective Anjana. You will be knowing about surgeries. Suddenly surgery किया, patient को लेके गया, सीधा OT में सीधा surgery किया. And there will be some elective surgeries, जैसे कि LSCS है, elective LSCS. Okay, so we are having two concepts. That is, one is a Sadhya Anjana and the other is an elective Anjana. And elective Anjana should be done only in Shuddha Tanu. That is a correct, perfect statement. If your target is in the posterior segment, I will explain once more. If your target is in the posterior segment, and if you want a particular good result in the posterior segment, यू ही आओ ये ले लो, ये अंजन है, ड्रॉप्स में दिया है, वो डालो, आपका 1 वीक में हो जाएगा, 1 मंथ के बाद आ जाओ, आपका ठीक हो जाएगा, नहीं. Then you are going to make blame on yourself and Anjana. It is not the correct method. So what you mean by Shuddha Tanu? हम कैसे करेंगे Shuddha Tanu? And same as there, while we are going for Tarpan also. Tarpanam cha putapagam cha nasya anarhe na shilayet. And here it is like, it is done in Shuddha Tanu. So what should be the routine or what should be the order that you are going to attain this Shuddha Tanu concept? First, you have to go for Adha Shuddhi or Kaya Shuddhi. Okay. You are going for Kaya Shuddhi. You can go for Kaya Shuddhi by Vamana, Virechana or Basti. ठीक है? Out of Panchakarma, you can opt Vaman, Virechana or Basti for attaining Kaya Shuddhi. उसके बाद हमें क्या करना है? Shira Shuddhi तो करना है. We are applying this Anjana in our eye. Okay. So for that, we are going to do Shira Shuddhi. What is the way of Shira Shuddhi? Obviously, it is Nasya. That is why Acharya is telling in the context of Tarpana and Pudapaka that this both should be done should not be done in Nasya Anarha. Tarpanam cha Pudapakam cha Nasya Anarhe na Shilayet. If you are not going for this Nasya, then Nasya kab karna hai? Kaya Shuddhi ke baad. So there also Acharya is telling it in other way, here also in a direct way. So first Kaya Shuddhi ho gaya, then Shira Shuddhi ho gaya. Uske baad Netra Matra Ashrite Male, you can go for Anjana, especially in posterior segment disorders. So if you are going to do this Anjana like Kana Pippali or Pippaliyadi Anjana, etc. in Doshantha or in posterior segment, make sure that your patient is having proper Shodhana. ठीक. Then according to Karma, Lekhan, Ropan or Prasantan. See, again, we should talk something about our common sense. We are having basically 3 doshas. Okay, Rakt ko bhi jodega to hum Pitta ke saath jodenge. So we are having Vata, Pitta and Kabha.
and we are going to prepare or we are going to buy some Anjanas, which is Vatahara, Pittahara or Kabahara. Okay. And again, while going to practice this procedure of Anjana, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि whether the Anjana that I am going to prepare or going to give is available with me or not. That is a main issue for all of us, those who are practicing proper Kriya Kalpas. We will not be getting so many yogas which we want for a patient. Okay, या तो हमें बाजार से खरीदना है या तो हमें बनाना है. तो ये जो बनाने वाली बात है वो हम पढ़ेंगे आज. एंड जो खरीद के करना है तो करने वाली बात जो होता है वो भी हमें पढ़ना है आज फॉर आवर प्रैक्टिकल अप्रोच. ओके, सो हमने अंजन खरीद लिया, पेशेंट आया, साम निराम ये सब तो हमने देख लिया, हमने तो तैर भी कर लिया कि हाँ इसमें कबहर करना है, लेखन करना है, रोपण करना है, या तो प्रसर्दन या स्नेहन करना है, या तो वातहर करना है. अगेन वी आर हैविंग अनदर कॉन्सेप्ट. वी कैन गो फॉर Kabahara Anjana and Pittahara Anjana. But while explaining Anjana, Acharya was specific, very specific towards Vatahara Anjana. He was telling कि मरुते तु विशेषतः. कोई भी अंजन खरीद के आप आंख में ऐसे नहीं डाल सकते. See, Anjana is a Shravana procedure. To some extent, not only a Shravana procedure, it is having a Prasadana nature also, it is having a Snehana nature also. I'm not denying, but generally we will be having the concept that it is going to do some Shravana or something from the Akshi. Anjan डालते हैं तो पानी तो आता है, ठीक है. So after this, we will be having a little bit of Vata Kopa, chances there. Okay, and we know there should not be more Kabha or there should not be more Pitta, and your Vata will be in a balance. That is why we were having this reason for all Akshi Rogas as Abhishyanta. One of my guru told me it is the jagda between Pati and Patni, and this Vata will be the Sasuma. Okay, so Vata should be in a balance, and ye jagdate hai Pit aur Kab ko leke, and then we should not be having a unstable Vata. So Vata Vriddhi bilkul nahi hona hai aankh mein, because Vata Vriddhi will cause Abhishyanta in terms of Kabha or in terms of Pitta. So we should be aware of any Vata Vriddhi happening to the eye. So Marute, if you are going for Anjana in Marut, it should be a Vishesh Anjana. Marute to Visheshataha. Principle number 1. And principle number 2, Lekhan Anjana. See, we all know that we are having Shleshmato Bhaya for Akshi. Chakshus Tejo Mayam Tasya Visheshat Shleshmato Bhayam. So all of our Anjana will be having a predominantly Kabahara nature. I'm not telling again, all the Anjanas are having Kabahara nature. Predominantly little bit Kabahara nature. Okay. And the same should be followed while we are using Anjana for Swastha. Yet another principle. So if we are preparing, now we are going to prepare Anjana. Okay. So if we are preparing Anjana, it should be having a little bit of Kabahara property along with the pacification of all other doshas. We are going for a little bit Kabahara Anjana for a daily use. पहले वाला तो रूल मैंने बोल दिया, मरुते तो विशेषतः. So we are having all these three concepts with us. Okay. And in Lekhan, see, all the rasas can be used for Anjana. But in Lekhan Anjana, Madhura rasa is not there. Madhura rasa is having Prasadana nature. So in Prasadana Anjana or Sneha Anjana, we will not be using, so in that we will be using Madhura rasa, and ulta, in Lekhan Anjana, we will not be using Madhura rasa. Raga Ashru Vedana Shantau Param Lekhanam Anjanam. So if we are going for Lekhan Anjana, we should be doing Lekhan Anjana after Raga Ashru Vedana Shanti. That is after Ramavastha, we are going for Lekhan Anjana, and that we will not be using Madhura Rasa. Okay. And again, this is another thing that one second. Okay. We should discuss about these things also. Matlab, regarding the sanskara, we are having Pinda, Rasa, Kriya and Churna.
तो इसमें अगेन पेशेंट इज सिटिंग इन आवर ओपीडी, अब तक हमने डिस्कशन ही कर रहे हैं, वी हैव नॉट येट स्टार्टेड द प्रोसीजर, तो अगेन वी आर हैविंग कंफ्यूजन। तो वात पित्त कफ का तो तैर हो गया, आम निराम का तो तैर हो गया, एंटीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट का तो तैर हो गया, लेखनांजन प्रसादनांजन संधावांजन ये सब तो अगेन वी विल बी डिस्कसिंग आल्सो, और थोड़ा बहुत हमारा confirmation हो गया. Now we have to confirm whether we should go for Pindanjana or Gutikanjana, Rasakriya or Churna. Okay, so see in Rasakriya it is very clear. Acharya Sushruta ने बोला है, Dalhan ने बोला है कि if we want a pitta rakta haratva, we should go for Rasakriya. ठीक है. And Pindanjan, see this is in the order that Pinda will be having a strongest capacity of removing the doshas, Rasakriya a little bit lesser, and Churna a milder version. See, now we are having in day-to-day practice or day-to-day habit, we are having this habit of surma, this दुनिया भर का काजल, ये काजल वो काजल बहुत हम लगाते हैं, चूर्ण भी लगाते हैं सुरमा के रूप में. See, in Gutika or Pindanjana, see we are having a concept of occult in modern. तो उसमें तो we are keeping something in the form of an insertion and it will be having a sustained release. जैसे sustained release tablets होता है, we are having something which will be having sustained release. So at that time Pindanjan और Gudikanjan उस कंसेप्ट में बनाया गया है करके हमें देखना है. बट अगेन while going for this Pindanjana, again we will be confused because Pindanjan जब करने के लिए बोला है तो आचार्य बोला उसको तो थोड़ा पानी में डाल के या जो भी आपको मेडिसिन उसमें सूटेबल लगता है उस पेशेंट में, तो वो डाल के उसको थोड़ा मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है, then you can use it as an anointment or as a drop also. So that is what we are doing in practically now. But we should think of a pinda that we are keeping in the lower fornix for a particular time in a smaller dimension, not a bigger one, because it should not cause laceration to your cornea. Okay, you should keep something in the lower portion and it should mix with your tear film. Then it should get dissolved in the eye for a longer tissue contact time and for a longer bioavailability. These are the two things that we have to keep in mind while we are going to go for do this Anjana. Okay, then Rasakriya. Rasakriya is somewhat like, see, starting from Vadvagaruga, we have discussed about this anterior segment and posterior segment. And anterior segment, जब हम disease पढ़ना शुरू करते हैं, सुसुत शुरू किया संधिगत रोग से, and बाबा शुरू किया वद्वगत रोग से. And in both we are having some pratisarana. Okay, we are going to apply something in the eye in order to remove the malas there, or in order to open the srotasas there. So that is also a form of Anjana because we are using the Pratisarana Dravya in the form of a Rasakriya. Then why we can't tell it as an Anjana, which is a Sadhya, which is having a Sadhya property. Okay. So in some conditions, शोभ होके आते हैं या कुछ discharge सब हो गया है, तो तब हमें instantly स्रोतस को शोधन करने के लिए we are having an option of this Sandhavanjana or Pratyanjana is after this main Lekhananjana or something. But again, we are having this concept of Sandhavanjana or some sort of Anjana which is having Tikshna property that we can do in Kharsha, Ashru, Raga, Shobha Samanvite. ठीक है? Sandhavanjana can be used in Kharsha, Raga, Ashru, etc. also. So in that condition or in as a Pratisarana Dravya also, we can go for Anjana in the anterior segment or even in that particular condition. We are not describing it as an anterior segment or posterior segment because if we are having an acute situation in front of us and if we are having the strong gut feeling that we have to cleanse that srotas all at a sudden, stat. जैसे हम TT injection stat लिखते हैं, Anjana stat for Srodo Shuddhi. We are not remembering about Shuddha Tanu at that time. Okay, this is one concept that we have to follow before we are
preparing or we are having an idea about Anjana. Then according to प्रभावा मृदु तीक्ष्ण, तीक्ष्ण है तो ज्यादा जो भी मात्रा बोला है अरेनु वेला एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें तो ज्यादा नहीं डालना है, मृदु है तो ठीक है, you can use. And according to rasa shastra etc. See, in this we are having Saviranjana, Rasanjana, Srotanjana etc. In the Srotanjana, you just underline the Srotanjana and you just go and read about Srotanjana, and you just go and read these types of Anjanas in Rasa Shastra. See, Sroto Anjana is having a prasadana property, and when there is any kabha vriddhi in your akshi, sorry, not kabha vriddhi, vata vriddhi. If you are having any vata vriddhi, pehle to humne bola marutetu visheshataha. In vatika condition, you should be very precise about the selection of a drug. So in that condition, Sroto Anjana will be beneficial for you. So you just go and read all these things, okay? Then matra, arenu, matar jaisa, vela, shalaga. See, this is a very tedious process. I have tried many times to make an SOP for weighing these things, and still I am doing and I have not got a particular perfect answer for this modern dimension with this arenu, vela and shalaka. Pinta Sakriya Chur mein. Hopefully, I'll be reaching my goal, and after that, we will be having a discussion later. Okay, now still I am working on this arenu, vela, shalaka, etc. Again in the morning, evening, and night. Tikshnanjan, usually Tikshnanjan jo kabahar jo hona hai, wo hum raat ko bhi karte hai. Why? With the concept that if I am doing that Lekhana Anjana in the morning hours, if it is having that Lekhana property, then after this Rava and all, my eyes will be having this Klandada. Okay. After this Klandada, again, if I am in the sunlight with the sun's rays, Bhaskara or Divakara, Kara, Sparsha, etc., then I'll be having a little bit Klandada in my Akshi. So in order to avoid that, I can do it in the night also. But again, if the night is having that much Shita property, I should not go for that. Why? Because that Shitatva can cause Sankocha in my Srotas and proper Sravan nahi hoga. So I'm not going for that. So that is why I told you, ये जो हमने theory पढ़ा है वो completely theory जैसा मतलब ऐसा नहीं है. We should have the yukti pramana also. It is very important. We will be having pratiksha, anumana, upamana, aptopdesha, etc. Everything we have to follow. But sabse upar we should have our yukti. Okay. Then according to Rutu that we have discussed in Shishira, Madhyama, Vasanta, Daily, Grishma, Prata and Saya. Why? Because sun to utna tez nahi hoga na. Varsha Ritu, when sun is there. Then Sharad, Subhat dena hai, Hemant mein, Madhyana mein dena hai. ठीक है. Purva Karma. Again, Purva Karma is applicable for an elective Anjana session. We will be having so many patients और हमारा situation ऐसा भी होता है कि हमें patient आते हैं दुबई से, आते हैं कि मुझे कल जाना है, वापस flight है, medicine दे दो. हम क्या करेंगे? It will be difficult for us शुद्ध तनु and all. तो हम यूं ही एक अंजन प्रिस्क्राइब करके देंगे, but we will explain the patient. अरे बाबा ऐसा करेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा ये तो करना पड़ेगा. At least we will be prescribing some हृदय विरेचन और विरेचन और something. At least थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा तो विरेचन हो जाए पेशेंट का, या थोड़ा तो शुद्धि हो जाए. Then we will be telling थोड़ा प्रतिवर्षण नस्य भी कर लो. ठीक है. So it is according to the patient. Maximum posterior segment में शुद्ध तनु और elective अंजना procedures में शुद्ध तनु should be there. And प्रधान कर्मा. See, हमने तो शलागा का definition जब पढ़ा था, we were having दशांगुला तनुर मध्य. See, I am from Kerala and I used to follow Ashtang Hridaya. The Susrut वाला अष्टांगुला तनुर मध्य है. I am not denying. So जो हमने पढ़ के रखा है, तो we are जब बच्चों को पढ़ाते हैं स्पेशली वी यूज टू स्टार्ट द श्लोका दशांगुला तनुर्मध्या शलाका मुकुलानना प्रशस्ता लेखने ताम्री. ठीक है. एंड वो जो रोपण करते हैं काललोहजा एंड अंगुलीचा एंड सुवर्णा एंड रौप्यजा फॉर प्रसादनांजना. दिस इज व्हाट और दिस इज हाउ वी आर लर्निंग द प्रोसीजर और द अबाउट द शलाका. एंड शलाका क्यों चाहिए हमें? अंजन करने के लिए. दिस इज अंजना शलागा. सो अंजन द प्रधान कर्मा इज अंजना. सो अंजन हमें करना है. कैसे करना है? खाली शलागा से भी करेंगे हम या तो अंगुली से भी करेंगे. तो
अंगुली से करते हैं तो हमें कैसे करना है, एंड शलाका से करते हैं तो हमें कैसे करना है, कहाँ शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, किस आंख में पहले करना है, किस आंख में बाद में करना है, whether it should be done in the lower fornix or it can be done in the upper fornix also. All these are our questions. आजकल ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं because now we are having a कर्म संकोचा. I should say that कर्म संकोचा. जैसे हमने आकाश कुसुमा ये सब तो पढ़ा था, we were having an अर्थ व्याप्ति and अर्थ संकोचा. I should tell that we are having a karma sangoja of the Anjana as a drop. We will be having ready-made Anjana and we will be dropping that. बस हमारा काम खत्म. अंजन का कुछ भी नहीं सोचना है, ना शलागा आता है, ना हाथ आते हैं. आजकल बहुत ये मॉडर्न, see, we are very eager to mimic MBBS people, है ना. वो लोग करते हैं कि हाथ, oh my God, वो स्टेराइल होता है क्या? तो आंख को मतलब हाथ को 30 डिग्री में बॉईल करे क्या? See, if we are using this हाथ और अंगुली, then there will be so many comments कि वो sterile नहीं है, ये है, वो है. Even while doing this PG, PhD, thesis and all, we will go through so many things like ये sterile नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब तो हमें करना पड़ेगा in order to tackle with the other science. But classically, traditionally, abhi bhi, if we are going for Anjana with Anguli, we will be getting a good result. ठीक है, ये तो मान लिया मैंने, हमें तो अच्छे से साफ करना है, वॉश करना है, उसके बाद ही करना है अंजन. I will give a demo at the end of the session. I'll be giving a demo for you. हाथ से, अंगुली से हम अंजन कैसे करेंगे, ठीक है. So you should not be blindly following this dropper Anjana concept, but also you should be having the classical concept. That's why we were having this topic title, classical and innovative variants of Anjana and its clinical aspect, a practical approach. This is our topic, right? So we will not be using the Anjana in dropper always. वो भी करेंगे और हमें ये भी करना पड़ेगा. Okay, so the first thing is regarding Anjana Shalaka. And Anjana Shalaka जो ग्लास रोड से भी करते हैं, अभी कभी सुरमा का जो रोड आते हैं, ग्लास रोड भी आते हैं, एल्यूमिनियम भी आते हैं, ठीक है. And again we are having दुनिया भर का भी जो हमने metals बोला है, we can have काला लोहा, we can have this सुवर्ण, रजता, etc. whatever it is. And if we are using the Anjana, we will be using it in a rolling movement. Why? ये पूरा अंजन डिप किया, उसके बाद अगर वो आप एक ही तरीके में करेंगे तो वो पूरा अंजन अंदर जाएगा क्या? No. The Anjana will be smeared in a 360 degree. And if you want to completely give that medicine in your akshi or fornix, you have to roll it. So the Anjana should start from, if you are starting from Kanina to Apanka, it should start rolling from Kanina to Apanka, and at Apanga, nothing should be left in your Shalaka. And again, there is, see, बहुत आचार्यस ने बहुत तरीके से अंजन तंबू को एक्सप्लेन किया है. So उसमें से युक्ति जो है, as per that we are going to do अंजना. ठीक है, आचार्य ने बोला है कि आपको लेफ्ट टाइम में पहले करना है, ठीक है, उसके बाद राइट टाइम में करेंगे. लेफ्ट टाइम में आपको करना है तो आपको आंख थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब यू हैव टू स्ट्रेच योर आईलिड्स. उसके बाद आपको राइट हैंड से आपको अंजन करना है. लेफ्ट टाइम में फर्स्ट, राइट टाइम में सेकेंड, ऐसा बोला है. देन सिटिंग पोजीशन में बोला है. आजकल तो पेशेंट जाके लेटते हैं, हस्बैंड वाइफ को ड्रॉप डाल के देते हैं, अंजना ड्रॉप लेट के, एंड सी व्हाटएवर इट इज. एंड देन अपांग टू कनीन और कनीन टू अपांग, बोथ आर ओके. बट नॉर्मली जो करते हैं इजी टेक्निक क्या होता है, कनीन टू अपांग वाला ही होता है, ठीक है. एंड वी आर नॉट इनटू दैट. एंड अगेन सी, इसमें तो बोला है प्रोसीजर में कि पहले आप एक आंख में करो. यू जस्ट इमेजिन ऑफ kids or अल्पसत्व patients in which you are going to apply a तीक्ष्ण अंजन. आपने कभी सोचा है, या अपने आप आज जाके एक तीक्ष्ण अंजन आंख में डाल के देखो. एक आंख में डालेंगे तो you will not be able to open the other eye also.
तो हम पेशेंट्स में कैसे करेंगे? जबरदस्ती आंख खोल के पकड़ के खोल के फिर अंजन करते हैं तो ना, वी हैव टू गिव मोर प्रेशर, इट कैन कॉज मोर ट्रोमा। तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी सेटल कर सकते हैं कि इफ दे आर अल्पसत्व पेशेंट एंड इफ यू आर हैविंग ए कैपेसिटी टू डू इट एट वंस इन 2 eyes simultaneously, it will be more good. Again, हमारे पास तो पेशेंट्स आते हैं, कोई पेशेंट्स ऐसा होगा कि अरे मैम घर में ये करके देने के लिए कोई नहीं है, मैं क्या करूं? तो हमें ऐसे भी बताना पड़ेगा कि आप खुद करते हैं तो कैसे करना है, एंड अगर आपका हस्बैंड या वाइफ या बच्चे आपको करके देते हैं तो अंजन कैसे करना है, वो भी हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, आई विल बी गिविंग अ डेमो आफ्टर दैट। ओ माय गॉड, 3:20 4:20 हो गया, आई विल बी वाइंडिंग अप सून। देन पश्चात कर्म, सी अंजन डाल दिया, अंजन डालने के बाद क्या होगा? श्रावण तो होगा, अंजन का मतलब दोष का श्रवण होगा, एंड दोष का श्रवण के बीच में वी शुड नॉट बी रबिंग योर आईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दुनिया भर का जो भी नाटक है वो सब करना नहीं है, आराम से आपको बैठना है। लेट द दोषा कम आउट एज श्रावा एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू जस्ट स्टार्ट रोलिंग योर आई बॉल विद इन। ठीक है, तो आपके पलंग को या आपके आई बॉल को हल्का सा मूवमेंट देना है आपको, ताकि आपका मेडिसिन पूरा सब जगह में स्मीयर हो जाए। इट शुड नॉट बी लाइक पूरा ऐसे वैसे करके पूरा रब करके, माइल्डली रब करता है तो भी चलेगा, बट इट शुड नॉट बी इन अ वेरी व्हाट इट इज वेरी विरुलेंट मूवमेंट एंड ऑल। ठीक है, सो mild movement of eyes, and after that if you are going for Anjana, this is a rule matlab it should be followed, you should go for Kshalana. That Kshalana can be done with plain water, it can be done with normal matlab koshna jala, it can be done with kada which is suitable for your this patient for that particular disease. Okay, this is very very important. And after that, after Anjana also you will be getting this debris and all in the akshi. So चेला से मतलब अंगुली में चेला, या अगर प्रॉपर अच्छा क्लोथ है तो you can use that cloth in your finger, उसको कवर करके you have to remove that debris and all from the eye. Okay, cleaning with the cloth, or else you can take it out with your ungli or with your finger also. But उससे भी ज्यादा अच्छा, if you are having a clean cloth wrapped in your finger, it will be coming out. Okay, then variants of Anjana and its indication. See, these things also you have to read. आज ही जाके thoroughly ये read करना पड़ेगा. What is Pratyanjana? Pratyanjana is done after Tikshnanjana. प्रत्यंजन का ये see, तीक्ष्णांजन के बाद ही हम प्रत्यंजन करते हैं मान लिया, but this Pratyanjana is not a मतलब उतना सॉफ्ट भी नहीं है. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ चूर्णांजना डन इन प्रशांत दोषा, इन तीक्ष्णांजना, इन दुर्बल नयना. सो दिस प्रत्यंजना इज गिवन फॉर अक्षि बला. ठीक है, एंड वी विल बी नोइंग अबाउट, और वी हैव स्टडीड अबाउट पिंडांजना आल्सो. दिस पिंडांजना इज आल्सो हैविंग दिस बल्या नेचर. After this Linganasha Vyadhana and all, we will be using this Ropananjana, or we will be using this Pindanjana for Netra Bala. So this is also a type of Ropananjana, Pindanjana, Pratyanjana, etc. Then Lekhananjana. So this is a common Anjana that we used to follow. ये see Lekhananjana का use तो बहुत जगह में बोला है. It is having main Kabahara property, and it should be given after Raga, Ashru, Vedana, Shanti. See, while we are learning a subject, we will be having a general statement, but इसका मतलब ये नहीं है कि general statement ही सब जगह follow होगा. We will be having some variance, some deviation from this statement when and wherever it is necessary. That we have to keep in mind. Okay, then Sandha Vanjana, जैसे मैंने बोला, in Gharsha Raga Ashru Rukharatva. It is having this property of removing or clearing the स्रोतस. चुटकी में वो साफ करेगा आपका स्रोतस. This is a type of वो सद्य भी दे सकते हैं आप. We should not go for an elective session for this Sandha Vanjanas, but we should keep in mind that ये तो 21 days Sandha Vanjana, 51 days Sandha Vanjana,
41 days Sandhavanjana nahi chalega. We are going to do this extremely Tikshna Anjana only for 3 days. ठीक है, after this Ravana, Srodho Shuddhi and all, you are going to give Dhara etc. Pittahara things or Shamana things or Prasadana Anjana after this also. ठीक है, then we are having so many things. Pindanjana, Rasakriya, जैसे मैंने बोला रक्त पित्त प्रसादन है. योगांजना जाके देख लेना, सुश्रुत संहिता में प्रक्लिनवत्म ट्रीटमेंट में बोला है योगांजना. Then Snehanjana. Okay. Snehanjana also, see, if we are going for the treatment of corneal disorders, if we are going for the treatment of corneal disorders, we are having the term called Shukla in cornea. See, cornea हमने पढ़ा है, is this Krishna Bhaga, and almost all the diseases are ending with Shukla. Kshata Shukla, Shuddha Shukla, Pakatya Shukla, और फिर क्या है Sira Shukla. दुनिया भर का शुक्ल टर्म आपको मिलेगा कृष्णगत रोग में. Why? Because almost all the disorders are causing opacity in your cornea. That is why we are having white color in the cornea, right? So we are going for this Lekhan Anjana. Or if there is Vrana also, after this, we have to obtain the Rukshatva and we have to remove the inflammation. And after that, you will be going for Lekhan Anjana. And in between, you have to go for Snehanjana. Otherwise, what will happen? After this Lekhan Anjana in Shukla Roga or Shukla Gata Roga or in Lekhan Anjana region, you will be having little bit of Vata Vriddhi. Okay, for alleviating this Vata Vriddhi, you should go for Snehanjana. See, Vayagri Vasa, Varahi Vasa, ये सब तो हमने पढ़ के रखा है, हम कहाँ करते हैं ये? You just give. अगर आप शंखांजन देके मतलब शंखांजन या दंडवर्तीज एंड ऑल या मुद्गांजन ऐसे जो भी या त्रिफला मशी, it is after this what it is called, after Arma Chedana and all. After Arma Chedana and all, if you are going for Chedana, it is well and good. And Arma Shesh ke liye we are having so many this Anjanas. Hai na? In that, we are having one Anjana called Tribhala Mashi. So I am coming into this Mashi concept later. So we are having Mashi there. In this condition also, if you are going for the usage of Mashi in your eye, if you are not mixing it with proper Sneha, or if you are not going for Snehanjana in between, for sure it is going to cause dry eye. Then patient गालियां देके चले जाएंगे, जाते हैं तो मेरे आंख में थोड़ा सा एक white कलर था कॉर्निया में, वो भी साइड में एक white कलर था, अब तो मुझे दुनिया भर का प्रॉब्लम है, पूरा आंख ड्राई हो गया. ये मेडिसिन का गलती नहीं है, हमारा गलती है. Because in between we were supposed to go for Snehanjana. In some patients, after this Lekhan Anjana, 1:1:1 जाना पड़ेगा हमें. Alternate days में Snehananjan करना पड़ेगा. कभी तो it will be like, excuse me, कुछ बोला? Am I audible? Is there any disturbance in between? Is there any disturbance in between? चलिए आप हो रहा है, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है मैम. Okay. So what I was telling us, if you are going for Lekhan Anjana, in between you should go for Snehanjana. Okay. And this Varahi Anjana etc. will be good. Or if you are not having any special Anjanas, Marute tu Visheshataha, you can go for, at least you can go for ghee. Okay, even though ghee is having Pittahara property mainly, it is having Vatahara property also, as all of us know. So we should go for these ghees. Durva Ghrida also we can use, or plain ghee also we can use. We can use Tiktaka, we can use Patoladi Ghrida, we can use Jivantyadi Ghrida. So many Ghridas are explained. All these things, both Tarpana, Pudapaka, Tarpana and all, in this Drishtikata Roga Pradesheda, we can use some of these Snehanjanas. Okay. Then mode of action, ये तो हमने पढ़ लिया, और we were having discussion about these things and all. Then Anjana preparation. अब तक तो हमने ये discuss किया था कि how we are going to approach a patient and how we are going to decide an Anjana, कर्मा और क्रियाकल्प, ये सब देखने के बाद
टाइम, आसाम निराम, एंटीरियर टारगेट, पोस्टीरियर टारगेट, ये पिंड कर लेना है, रसक्रिया लेना है या चूर्ण लेना है, ये सब देखने के बाद हमने तो कंफर्म कर लिया कि हाँ हमें तो अंजन करना ही है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस अंजना? या तो हम खरीदेंगे, ठीक है, खरीदने के बाद क्या करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई वन थिंग। एंड अगर हमने खरीदा नहीं है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? सी, नॉर्मल प्रिपरेशन हर क्लासिक्स में अवेलेबल है। थोड़ा ये वो मेडिसिन बोला, उसका चूर्ण बना लो, उसको स्प्रिंकल करो, चूर्णांजन हो गया। या तो उस चूर्ण को घी के साथ मिक्स करो या कुछ मेडिसिन के साथ मिक्स करो और लगा लो, तो वो अंजन हो गया। या तो हनी ये सब डाल के आप रसक्रिया बना लो, वो भी हो गया। ठीक है, ये सब तो क्लासिकली जो हमने पढ़ा है टेक्स्ट में, वी आर हैविंग सो मेनी कॉम्बिनेशंस एंड ऑल, आई एम नॉट इनटू दैट आल्सो। और एल्स वी विल बी हैविंग दिस अंजना बॉटल्स रेडीमेड, हम बाहर से खरीदेंगे। ठीक है, वो जो अंजन का ड्रॉप्स है वो या तो हम ड्रॉप जैसे डाल सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड, अगर हम ड्रॉप में डालेंगे तो उसको हम हर्षोदन बोलेंगे ना। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। बट ट्राई टू डू दिस अंजना लाइक अनॉइंटमेंट, स्मीयर करके ही अंजन करने का ट्राई करो। ठीक है, सो क्लासिकल मेथड क्या क्या बोला है टेक्स्ट में, आई एम टेलिंग अबाउट मशीन जो आपको नॉर्मल स्वस्थ में भी यूज हो जाएगा। सो वी आर हैविंग पिंडा, अगेन so many combinations are there, you are going to make the balls, then rasakriya again with honey and all, honey, grita, etc. And then we are having this churna, and outside that we are having a preparation which is called masi or mashi. So now how we are going to prepare this mashi, and the same mashi we are using in a day-to-day basis, or the common men are using, or the swastha are using this masi. So we should know about the masi which is used for a patient or which is used for a swastha. So masi preparation by andardhuma method. This is see, we are having an example of tribhala mashi, जैसे मैंने बोला है ना. So tribhala mashi is made by andardhuma method. How we are going to prepare it? आचार्य ने क्लियरली बोला है कि आपको ना हरितकी, विभितकी, आमलकी सेपरेट लेना है, एंड आपको पहले उसको पानी डाल के ग्राइंड करना है। उसके बाद सी, जल्दी जल्दी में हम डायरेक्टली भी जला देते हैं उसको, फिर भी हमें मसी मिलेगा। बट क्लासिकल मेथड में ऐसे बोला है कि यू हैव टू ग्राइंड इट विद वाटर एंड देन यू हैव टू कीप इट इन दिस पुटा, और वी हैव टू शरावा को क्लोज करते हैं एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर पुटा। ठीक है, जब तक वो कंप्लीटली जलता है, आपको अंदर मसी मिलता है, तब तक आपको उसको जलाना है। ठीक है, उसके बाद वो खोलेगा तो आपको अंदर मसी मिलेगा, एंड फिर क्या करना है, उस मसी को अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके फाइन, मतलब अच्छे से छान के या फाइन पार्टिकल्स हमें निकालना है उसमें से। एंड अगेन आचार्य इज टेलिंग यू हैव टू मेक इट सेपरेटली, दैट इज त्रिफला मशी में हरितकी मशी, विभूतिकी मशी एंड आमलकी मशी सेपरेट है। एंड देन यू हैव टू ऐड 2 टाइप्स ऑफ लवणा, सुवर्चिल लवणा एंड साइंथव एंड सुवर्चिल आपको ऐड करना है, एंड देन यू कैन बॉटल इट, एंड जब आपको चाहिए यू कैन यूज दैट। बट डायरेक्टली जब आप मसी यूज करते हैं तो उसका पीएच का भी आपको एक सोच आना चाहिए। सी, इट इज अ क्षारा, इट विल बी हैविंग अ मोर अल्कलाइन पीएच, है ना। सो जब हम मशी का यूज करते हैं, वी नॉर्मली क्या करते हैं, वी विल बी यूजिंग सम स्नेहा और घी और कैस्टर ऑयल, समथिंग इन दैट, विथ दैट it will be, the pH of that will be reduced. Normally 7, 7.2, 7.5 तक ठीक है, चलो it can be there, आंख में 7.2 या 5 तक भी मिलता है, या basically it is towards little bit alkaline nature आई। ठीक है, तो मसी, इसीलिए मसी डेली डालता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगेन it should not be that alkaline. So if you are going for a masi in a daily or day-to-day basis, you should be mixing it with proper sneha. It can be grita, it can be what it is called makhan, it is butter, it can be fresh butter, or it can be what it is called, it can be eranda taila etc. बच्चों में तो नॉर्मली वो फ्रेश बटर यूज करने के लिए बोलते हैं,
वो हल्का सा एसिडिक होता है ना, फ्रेश बटर में छाछ का टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। एंड ये तो है मसी, इट इज क्षारा, वो हल्का सा न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, तो वो उतना दिक्कत नहीं देगा बच्चों में भी, ठीक है। सो एंड द अदर इज मसी प्रिपरेशन बाय डायरेक्ट बर्निंग। डायरेक्ट बर्निंग, अगर एक मेडिसिन है उसको डायरेक्टली जला के मसी मिलेगा क्या? अगेन इसका दो वेरिएंट्स है। कोई तो ऐसे करते हैं जैसे कि सी, I should tell you about the concept of this masi preparation, classical or traditional method in South India and in North India. In South India, the preparation is somewhat different, and in North India, I have heard from many elderly people that they used to prepare this masi or Anjana for the younger ones in the gav and all by so and so methods. What they used to do is they will be directly burning, directly burn करके भी करते हैं, और कोई तो सरसों के तेल में जलाते हैं, या कोई तो उसको घी में जलाते हैं एंड उसके ऊपर जो आते हैं वो निकालते हैं। कोई तो डायरेक्टली बर्न करते हैं, बादाम एंड ऑल, बादाम जलाते हैं, या तो जीरा जलाते हैं सरसों के तेल में डिप करके या घी में डिप करके या डायरेक्ट, एंड उसको फिर ग्राइंड करके छान के अच्छे से छान के वो यूज करते हैं। तो अगेन इसमें तेल वेल लगा के यूज करते हैं। कोई तो कोकोनट ऑयल लगा के लगाते हैं, कोई तो घी, बटर तो मैंने सुना नहीं है इधर नॉर्थ में। ओके, दिस इज वन मेथड। इन केरला वी यूज्ड टू prepare this masi with another technique. What we will do is we will be having this medicated the swarasas, or if it is a dry drug, we will be having kada, and we will be having a liquid. Okay, then we will be having this karpasa or cotton cloth, clean cotton cloth, and we will be having this bhavana of this cloth in this medicine. We will be dipping and then we will be drying it, and we will be doing it at least for 7 days, ताकि वो medicines का potency उसमें अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, घी में जलाते हैं। कोई तो ऐसे है कि उसको तिल तेल में भी जलाते हैं, कोई तिल तेल में भी जलाते हैं कोई, और कोई घी में भी जलाते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल बी कलेक्टिंग दैट, वो जो सूट ऊपर जाते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। इट कैन बी विद अ कॉपर वेसल, इट कैन बी विद अ ब्रॉन्ज वेसल, और इट कैन बी विद मतलब जो प्लांटेन का जो स्टेम है उसको कट करके उसको हम बोलते हैं वाया पोला। ओके, द प्लांटेन, उसको हम ऊपर रखते हैं, उसमें हम थोड़ा मेडिसिन कलेक्ट कर लेते हैं। या तो इन सीनियर सिटीजन ऐसे छोटे मोटे अगर क्वांटिटी में बनाते हैं, तो बड़ा जो अनियन होता है ना, दस उल्ली बोलते हैं हम केरल में, उल्ली पोला, मतलब जो लहसुन नहीं, जो प्याज है, बड़ा वाला प्याज है, उसको कट करके उसका जैसे कि वो दीप जलाने के लिए यूज करते हैं ना, तो ऐसे जो लहसुन है, लहसुन भी कभी कभी उसके ऊपर रखते हैं, एंड उसी में उसी में छोटा उंगली डाल के मिक्स करके उसी में ही तेल डाल के रखते हैं, एंड उसी से अंजन करते हैं। What will be the fate? You just imagine, उतना तीक्ष्ण होगा ना। प्याज अगर हम कट करते हैं तो भी we will be having watering, and you just imagine we are collecting that soot in this pyaj, and then again we are pouring some ghee into that itself, and we are using as an anjana. So in cataract and all, or in this elderly condition, we used to use these type of anjanas, which is very tikshna, or it is good in cataract, ठीक है। And यूज ऑफ पिंडा, ये तो हमें मार्केट में अवेलेबल मिलता है, राइट। पिंडा, रसक्रिया, चूर्णा एक्सेट्रा, एंड ट्रेडिशनल मेथड दैट आई हैव टोल्ड विद शीला मींस दैट अभी जो मैंने बोला क्लोथ वाला, और इट इज मशी तिरी, दैट इज वी विल बी मेकिंग दैट तिरी, और वी विल बी मेकिंग द विक ऑफ दिस क्लोथ, एंड वी विल बी कीपिंग इट। दिस इज फॉर मशी तिरी, वो हम सुखा के रखते हैं, एंड जब हमें जरूरत पड़ता है तब हम जला के यूज करते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट after making this mashi, we have to mix it in this suitable, अगर हम daily use करते हैं तो we should use fresh butter, रखना नहीं होता है। छोटे बच्चों में हम fresh butter यूज करके यूज करते हैं, ठीक है। fresh butter यूज करते हैं तो उसका pH मेंटेन हो जाता है। and if you are not going for fresh butter, or if you are not going for this day to day basis anjana, then you should keep this anjana for some or few days, minimum 10 days or something, after mixing with ghee, so that the pH will be maintained.
वो 7.2 7.5 के आसपास आपको pH मिलेगा, ठीक है। Then commonly used drugs, we use this सहदेवी। normally this स्वस्थ लोगों को यूज करने के लिए सहदेवी हम यूज करते हैं, भृंगराज यूज करते हैं, निर्गुंडी जब जिसके आंख में कब का प्रेडोमिनेंस होता है, कब का प्रेडोमिनेंस होता है या शोभ उसके आंख में होते हैं, तो हम उसको निर्गुंडी से काजल बना के देते हैं। या तो जिसको ब्लिफराइटिस एक्सेट्रा होता है तो उसको तुलसी का पत्ता भी डाल के बना के देते हैं। एंड इन एल्डरली पीपल, note this, in elderly people and in children with kapha predominance, we used to add betel leaves and lemon in that, and it will be little bit तीक्ष्ण। ये जो काजल है वो लगाने के बाद आपके आंख में से आंसू आते हैं, जलन ज्यादा होता है। बट सहदेवी अंजन आप डाल के देखो, भृंगराज वाला अंजन आप डाल के देखो, आपको उतना पानी नहीं आ जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट बी दैट तीक्ष्ण। एंड ये जो बादाम एंड जीरा जो लिखा है मैंने, दैट इज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। बादाम को जला के या जीरा को जला के वो करते हैं, ठीक है। एंड जो कलेक्शन के लिए जो मैंने बोला, इन केरला वी आर हैविंग अ ब्रॉन्ज वेसल विच इज कॉल्ड किन्नम, वो हम उसके ऊपर रखते हैं नॉर्मली। या तो वाड़ेपोला जो मैंने बोला, प्लांटेन, देन उल्ली पोला, दैट जो प्याज है ना, बड़ा वाला प्याज, उसको कट करके उसका एक साइड पर, वो इट इज नॉट उतना ये अच्छा नहीं होता है मेरे ख्याल से, नॉट अच्छा। लाइक सी, इसमें क्या होता है कि ज्यादा अधिकतर जो सूट है वो मिस हो जाता है। सो दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस, ठीक है। तो बाकी साइड में जो किन्नम रख के, सेंटर में ये उल्ली पोला रख के, तो थोड़ा इसमें भी आता है, बाकी जो भी सूट है वो आपको वो जो वेसल है, जो किन्नम जो मैंने बोला उसमें आके रुकते हैं। इट कैन बी कॉपर वेसल, सिल्वर वेसल, एंड आजकल तो हम क्या करते हैं, स्टील का वेसल भी यूज करते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। देन बाइंडर्स, we can use ghee only, we can use ghee and honey, we can use fresh butter, castor oil, and one more thing is there, see this kajal jo hai hum khali aankh mein nahi dalte hain, we will be using it in eyebrows and all. So if we are using this kajal for the eyebrows of this younger ones or this neonates or chote bacche and all, we have to use this। see हम क्या करते हैं, इसका ये बना के डिफरेंट बर्तन में फिल करके रखते हैं, वन विथ दिस निर्गुंडी, वन विथ तुलसी, वन विथ दिस, वन विथ दैट, वी विल बी हैविंग इन आवर होम। पुराने मतलब जो खानदानी घर में पुराने के टाइम में जहाँ वो जो वैद्यास होते हैं, यू विल बी हैविंग डिफरेंट कांच का बॉटल जिसमें इसका मशी रहते हैं, एक तुलसी का होगा, एक निर्गुंडी का होगा, एक सहदेवी का होगा, एक में बीटिल और लेमन स्क्वीज करके बनाया होगा। तो देन वी विल बी हैविंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एज पर द पेशेंट। इसमें से मिक्स मैच करते हैं एंड घी लगा के हम देते हैं पेशेंट को और बोलते हैं कि 10 दिन के बाद इसको शुरू करना है, ठीक है। एंड उस 10 दिन में तो जो भी करना है हम पेशेंट्स को बताते हैं, थोड़ा तो शुद्धि होना है ना, शुद्ध तनु होना है ना, तब तक वो हम करते हैं। तो अब जब हम कास्टर ऑयल बना के मिक्स करके देते हैं तो वो इट विल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ योर आईब्रोज। सो यू ऑल कैन ट्राई ऑल दीज अंजनास, ओके। देन अगेन द स्टोरेज, सी क्लासिकल टेक्स्ट में जो भी बोला है वो आप एक बार जाके देख लेना। अगर आपको लॉन्ग टर्म में रखना होता है तो अंजन का कंटेनर्स का एक बार जाके देख लेना, ठीक है। एंड स्वर्ण, वो मधुरांजन है तो स्वर्ण में रखो, ये तो देख लेना। देन अंजन का खरल जो हमने ट्रीट करना है, अगर मशी बना है या जो पिंडांजन बनाना है या चूर्णांजन बनाना है या भावना करना है, तो वी हैव टू डू दिस टिट्रेशन ना। तो उसके लिए भी आचार्य ने डायमेंशन बोला है, मतलब वेसल्स का आयता विस्तीर्ण, ये सब तो आप एक बार देख लेना। सी दीज आर द थिंग्स। ये जो छोटा इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, हम केरल में इसको नीला विलक बोलते हैं, इट इज लाइक अ दिया, ठीक है। इसके अंदर हम घी डालते हैं या तिल तेल डालते हैं, एंड जो मशीतिरी जो मैंने बोला, शीला, हाँ अंजन शीला और मशीतिरी जो मैंने बोला वो उसमें रखते हैं, उसके बाद हम उसको जलाते हैं। एंड ये जो प्लेट जो दिख रहा है ना, दिस इज नॉट बेसिकली किन्नम, दिस इज अ तालम, ओके। वो किन्नम का जो है वो साइड में वो थोड़ा बेंड होगा, इट विल बी लाइक अ डीप बर्तन। तो उसमें से क्या है, व्हाट इज द पिक्यूलियरिटी और पॉजिटिव थिंग ऑफ दैट, मैक्सिमम वेस्टेज नहीं होता इसमें से, तो वेस्टेज हो जाता है। एंड अगर आप छोटा दिया में जलाते हैं तो आप प्रैक्टिकली एक काम कर सकते हैं, चारों तरफ छोटा जो कटोरी है ना वो रखना,
और उसके ऊपर आपका सीड प्लेट मतलब अपसाइड डाउन करके रख लेना, तो लेस वेस्टेज होगा, मैक्सिमम यील्ड रहेगा अंजन का, ठीक है। एंड अगर ज्यादा टाइम तक जलाना है एंड वो उतना प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन यूज ग्लासेस ऑल्सो, 4 ग्लास रख लेना चारों कोने पे, उससे भी अच्छा होगा कटोरी रखना, ताकि वो वेस्टेज कम रहेगा, ठीक है। सी दिस इज वन मेथड, अगर आप चारों तरफ कुछ रख के ऊपर ये रख लेते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। एंड किन्नम भी हम ऐसे रख लेते हैं। एंड सी वाड़ेपोला एंड ऑल अगर ज्यादा बनाना होता है तो इट वोंट वर्क, वो जल जाता है, ठीक है। उल्ली एंड वाड़ापोला जो मैंने पहले बोला, वो जो कच्चा ये होता है तो वो जल जाता है, उसका रस इसमें आता है धीरे धीरे करके, बट वो उसके बाद वो जल जाता है। सो फॉर ज्यादा अगर बनाना होता है तो अगर ज्यादा टाइम तक जलना होता है तो ऐसे ही करना पड़ता है हमें, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल स्केल अंजना, वो घर में ना इतना ही काफी रहता है आपको। एंड दिस इज लिटिल बिट मतलब थोड़ा लार्जर स्केल में बनाया है, बट दिस ऑल्सो ठीक है। देखो ये सी यू कैन हैव सो मेनी कोटिंग्स ऑफ दिस सूट इन दैट पर्टिकुलर वेसल, सेम वेसल एक बार जलाने के, देखो आपने इसके पहले क्या देखा, एक व्हाट इट इज कॉल्ड कढ़ाई, ठीक है। ये कढ़ाई में रख के, ये आयरन का कढ़ाई है, आयरन का कढ़ाई में रख के हमने उसको जलाया, एंड एक बार एक स्टील का ये कवरिंग रखा है, एंड ये ना जब आप नेक्स्ट वर्ती डालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वर्ती डालते हैं, उसके बाद भी आप ये सेम अगर रखेगा तो दैट कोटिंग विल बी मोर, 3, 4, 5 कोटिंग तक जाता है तो भी ना वो वहां रहता है, बट उससे भी ज्यादा जब होता है तो अपने आप वो कंडेंस होके वो गिरता है, तो देन इट विल नॉट बी सेफ। तो हमें एक 4-5 कोटिंग के बाद उसको निकालना पड़ता है, एंड उसके बाद यू हैव टू, ये इसमें हाथ नहीं डालना होता है, ये तो अभी तो स्टरलाइज है ना, तो हाथ ऐसा कुछ तो करना नहीं है। यू कैन यूज दैट फिल्म्स, एक्सरे फिल्म्स और समथिंग लाइक दैट, क्लीन, हाँ वो अच्छे से स्पिरिट से क्लीन करके, या तो यूवी चेम्बर में रख के उसको क्लीन करो, स्टरलाइज करो, उसके बाद अच्छे से आप ले लो। एंड अगर हाथ अच्छा है तो ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने उसको उल्टा बोला था ना, तो अभी आपको क्वेश्चन आएगा तो पहले आप मैडम ने ही बोला था कि हाथ से भी तो ठीक है, ठीक है। इफ यू आर श्योर अबाउट द स्टेराइल कंडीशन इट इज ओके, ठीक है, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो दिस इज काजल जो हम रोल करके ऐसे रोल करके आते हैं, एंड इसके बाद इसको मतलब वी विल बी बॉटलिंग इट विथ सूटेबल स्नेहा, एंड दिस इज अंदर धुमा मेथड, मैंने बोला था ना। इसमें तो क्या क्या है, वन इज त्रिबला है इसमें, हरितकी, विपीतकी, आमलकी, एंड वन इज केशा, केश मशी भी ऐसे ही बनाते हैं। एंड यू जस्ट गो थ्रू दीज मशी प्रिपरेशंस, ओके, इन अष्टांग तृतीया, मतलब जो भी क्लासिकल टेक्स्ट में जहां जहां भी ये बताया है, यू जस्ट गो थ्रू दिस टुडे इटसेल्फ। हाँ, देन डिस्कशन ये तो ऑलरेडी ठीक है, वो नॉर्मल कन्वेंशनल रूट वाला ये सब तो ठीक है। क्रियाकल्पास, सी while we are going for kriyakalpas, we should be more confident than other ointments or than other eye drops, etc., which is available in the modern system of medicine, because our kriyakalpas are giving a more tissue contact time compared to others, and bioavailability is also more. See, अभी तो हम खाली अंजन का explanation किया है. We are having a detailed discussion about this tarpan, pudpak and all. You will be beautifully knowing about this penetration of the medicines towards the posterior segment and all. So that is why आचार्य ने बोला है, तर्पण में आपने तो टाइम देखा होगा ना, बाहर है तो ठीक है 100 मात्रा रखो चलेगा, अगर डीपर है it is increasing, the आचार्य is increasing the time and all. So if a medicine should reach the posterior target, the bioavailability and tissue contact time should be more, the number of days should be more, or the time should be more. So all these are to be kept in your mind while you are going for a kriya kalpa. And kriya kalp सुनते हैं तो पहले 2 बार सोचना है, kriya for I or kriya in I. The answer should be kriya for I. Kriya for I can be done in the eye and outside the eye, है ना? Outside the eye, see, mukhalepa sheelanam dridham bhavati darshanam. You can go for mukhalepa for eye disorders. You can go for gandusha for eye disorders.
You can go for Nasya for eye disorders. You can go for Murdhani Taila for eye disorders. Along with that, you can go for Kriya Kalpas, जो आंख में स्पेसिफिकली करते हैं. ठीक है. एंड उसमें भी आपको जुडिशियली सेलेक्ट करना होता है कि मुझे अभी अश्वोधन करना है या अंजन करना है. एंड अश्वोधन करना है तो किधर करना है. वेदर इट इज अ सर्कमसिलियरी कंजेशन, आई शुड डू इन दृष्टि मध्य. इफ इट इज अ कंजंक्टिवल कंजेशन, आई शुड ऑप्ट कनीन संधि. ठीक है. शार्ंगधर ने तो बोला है दृष्टि मध्य में करना है, तो क्यों अगेन वी विल बी कंफ्यूज्ड. तो ऐसा भी हो सकता है ना. इट कैन बी वन कैन बी देयर इन सर्कमसिलियरी कंजेशन एंड द अदर इन conjunctival congestion. Okay, I am deviating. So abhi before this, see the slide, and I'll do always with this sloka. Naktam dinani me andi katham bhudasya samprati dukha bhak na bhavatyevam sada sannihita smriti. See, अगर शॉर्ट में मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो खाली इतना है कि we should be the better version of ourselves in each and every day. इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन जो भी आपको लगता है, यू जस्ट गो एंड रीड द अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दिनचर्या अध्याय एंड यू शुड गेट द डीपर मीनिंग ऑफ दिस बिफोर यू आर लिविंग एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल. अभी आई थिंक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाइम है, देन ओनली आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग, अदरवाइज आई विल बी स्किपिंग बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो गया है. अप टू दिस व्हाट आई शुड टेल. कोऑर्डिनेटर सर किधर है? कर दीजिए डेमोन्स्ट्रेशन आप. मैम अभी टाइम है, आप कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट. ओके ओके, ठीक है. आई विल गो फॉर दैट. डॉक्टर अपर्णा प्लीज कम. सी दिस इज, ये तो है, दिस इज वन ऑफ द पत्रा. ये कौन सा पत्र है जो शोभहर है? व्हिच पत्रा इट इज? एनीबॉडी? Anybody? Nirgundi. Very good. निर्गुंडी. This is Nirgundi. Okay. So I'll be, ये सहदेवी तो आप अवेलेबल नहीं है, मैंने जाके देखा गार्डन में, इट इज नॉट अवेलेबल. आप ना गूगल करके देख लेना सहदेवी. सहदेवी से बना के रखो और डेली अंजन जो बनाया हुआ अंजन से कर लो, दैट विल बी गुड. ठीक है. एंड नाउ सी आई एम यूजिंग दिस इलनीर कुड़म्ब. ये हमारे इधर ज्यादा चलता है इलनीर कुड़म्ब. It's visible, not visible. Visible नहीं है क्या ये? ठीक है, whatever it is, I'll be demonstrating. ठीक है, आप ये सब तो गूगल कर लेना, मेडिसिन एंड ऑल तो आपको मार्केट में बहुत अवेलेबल हो जाएगा. बट जस्ट I'll be teaching you how to do this अंजना with your finger. दोनों आंख में हमें कैसे करना है. जैसे मैंने बोला, जब पेशेंट्स आते हैं तो ऐसे भी बोलते हैं कि घर में कोई नहीं है, मैं खुद कैसे करूं. कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं. अगर किसी को करना है तो वैसे भी कर सकते हैं. यू जस्ट सी दिस लिटिल फिंगर. ठीक है, ये मैंने ऐसे रख लिया. सी, इफ आई एम स्मीयरिंग दिस अंजना, पहले तो मुझे आंख साफ करना है एंड आई शुड टेक द अंजना हियर. ठीक है, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्मीयर इट इन माई लिटिल फिंगर. लिटिल फिंगर में अगर मुझे खुद करना होता है तो आई विल बी स्मीयरिंग इन द इनर एस्पेक्ट ऑफ माई, सी दिस इज द आउटर एस्पेक्ट एंड दिस इज द इनर एस्पेक्ट ऑफ माई लिटिल फिंगर. ठीक है, अगर मुझे खुद करना है या बच्चों में करना है, ठीक है, आई विल बी स्मीयरिंग द अंजना इन द इनर पोर्शन लाइक दिस. इनर वे में सी, अगर ये हाथ है तो मैं ऐसे लूंगी अंजन को एंड देन आई विल बी स्मीयरिंग लाइक दिस. थोड़ा जितना आंख का जितना डिस्टेंस है थोड़ा उतना मैं इसको स्मीयर करूंगी. ठीक है, स्मीयर करने के बाद मुझे खुद करना होता है तो आई विल बी स्ट्रेचिंग माय लोअर फॉर्निक्स. लोअर, ये तो अभी मैंने स्मीयर किया ना, स्ट्रेचिंग द लोअर फॉर्निक्स एंड आई विल बी डूइंग, ये दोनों में एक साथ करूंगी मैं. तो वो जलन होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, एक आंख खोलेगा नहीं खोलेगा वाला इश्यूज नहीं होता है. एंड अगर मुझे किसी को करके देना है, please sit. I'll be just washing the hands and coming. You please sit. I'll introduce Dr. Aparna. This is the internee and she with another intern is developing a device for large scale preparation of Anjana. Okay, I'll just wash my hands and come. Just give me 1 second.
Please sit. Please. चश्मा निकालो. See here I am taking the Anjana, ठीक है, and now I have to apply in some others eye. तो मुझे बाहर की तरफ ये वाला एरिया में लेना है, not in the inner area, ठीक है. ऐसा लिया मैंने and फिर मैंने बाहर के एरिया में ऐसे लेंथ में उसको स्मीयर किया like this, ठीक है. And now I am going to apply again पेशेंट का नीचे वाला आंख, it is visible ना सर, ऐसे करके इसको खींच के ऊपर देखो, ऊपर देखने के लिए बोलना है एंड ये दोनों में ऑल एट अ सडन. गॉट इट. चुटकी में हो जाएगा काम. एंड देखो कुछ बचा नहीं है ना हाथ में, तो वो पूरा क्लियर हो गया है, पूरे आंख में चले गए हैं. एंड ये ना यूनिफॉर्मली स्मीयर होने में हेल्प करेगा आपका. आपको वहां जाके बैठना है एंड आफ्टर दैट यू विल बी डूइंग शालना, ठीक है. See, this is a matter of seconds. चुटकी में हो जाएगा काम. दूसरों को करना है वो भी हो जाएगा. सिर्फ ये देखना है कि अगर मुझे खुद करना है तो इनर साइड में मुझे स्मीयर करना है ऐसे, एंड अगर किसी को करके देना है तो मुझे वो बाहर वाला एरिया में करना होता है, ठीक है. If I am doing it, it should be like this. And जब बच्चों में करना होता है तो क्या करेंगे आप? बच्चों के पीछे से करना होता है. सी, अगर पेशेंट बैठते हैं तो बच्चे बैठते हैं तो हम उसे बात करना है, वो टॉयज एंड ऑल देना होता है, एंड फिर पीछे से करते हैं. पीछे से करते हैं तो वो लोअर साइड में नहीं होता है. नॉर्मली आचार्य ने ये बोला है कि सम ऑफ द आचार्यज आर एक्सप्लेनिंग लाइक you should be doing that Anjana from Kanin to Apang or Apang to Kanin, whatever it is, in the lower fornix. It is a rule by some acharyas. Matlab, the principle behind this, you should not give, if there is any particle in your Anjana, you should not give any scratch to your cornea. Principle वही है, ठीक है. तो हम पेशेंट को ऊपर देखने के लिए बोलेंगे और काजल कॉर्निया के नीचे ही लगाएंगे फॉर्निक्स पे. एंड बच्चों में क्या करते हैं, हम पीछे खड़ा होके पीछे वाले ये मतलब अपर वाले लिड को ऐसे करके देन पीछे से हम उसको ऐसे ऑल एट अ सडन दोनों आंख में स्मीयर करते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग अंजना विद दिस फिंगर्स. एंड इफ इट इज अ रोड है तो हमें कैसे करना होता है, अंजन पूरा स्मीयर करना होता है, नॉट एट द टिप ओनली, थोड़ा स्मीयर करना होता है एंड उसके बाद रोलिंग मूवमेंट पे. सी, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ऐसे खींचना नहीं है. अभी तो मैंने आंख में डायरेक्टली ऐसा खींचा बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मैंने ऑलरेडी स्मीयर करके रखा है ना. एंड इसमें तो मुझे पूरा 360 डिग्री में स्मीयर है ना, यहाँ तो खाली यहाँ स्मीयर था तो मैंने डायरेक्टली खींचा. एंड in glass rod or Anjana Shalaka, if I am going for Anjana, I should start and I should roll it like this, है ना, घुमाना है उसको. It should be like this. So with a rod or with an Anjana Shalaka, we are going to do like this, and with Anguli, we are going to do like this. ठीक है. और I'll just come after washing my hands. Give me 1 minute. Keep it there, please. Okay, this was our session. टेक होम के लिए कुछ समझ में आया कि नहीं? सब लोग चले गए? नहीं मैम है. अगर आपको किसी को डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं मैम से. काफी अच्छा सेशन रहा आपका. थैंक यू.
चश्मा छूट जाता मैडम कि नहीं? चश्मा छूट गया क्या? ऑडिबल नहीं है, मैं सुन नहीं रही हूँ। आप ऑडिबल नहीं उनका है कहना सर। है कि अपना चश्मे के नंबर कम हो सकते हैं क्या इससे? अंजन से चश्मे का नंबर कम हो जाता है मैडम? चश्मे का नंबर कम हो जाता है, और नॉट ओनली विद अंजना, विद सो मेनी अदर प्रोसीजर्स आल्सो, एंड दैट डिपेंड्स कि आपको क्यों चश्मा हुआ है। ऐसा ब्लाइंडली हम नहीं बोल सकते हैं कि चश्मा का नंबर पूरा खत्म होगा। आपको क्यों चश्मा हुआ है, निदान देखना पड़ेगा ना। निदान परिवर्जन के बाद ही चिकित्सा करना पड़ेगा मुझे। ठीक। अगेन ऑडिबल नहीं है आप, ऑडिबल नहीं है आप दोबारा। हाँ अभी ऑडिबल है मैम। ही इज सेइंग ओके। ओके, थैंक यू, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम, सुंदर व्याख्या की आपने। अंजन थैंक बनाने यू, की विधि बहुत अच्छी बताई। थैंक यू वेरी मच सर। बॉस प्लीज मैम से प्रेजेंटेशन लेके ग्रुप में भेज दीजिएगा। श्योर। अगर और किसी को डाउट्स हैं तो आप Thank मैम you. से पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम फाइंड अप कर देंगे। और किसी को डाउट्स हैं? ओके, एज मुझे एक अनाउंसमेंट अच्छा, करनी ये है। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद में अंजना का प्रयोग होता है क्या? लेंस रख के, कॉन्टैक्ट लेंस रख के उसके ऊपर अंजन नहीं लगाना प्लीज। वही कॉन्टैक्ट लेंस को मेरे रिमूव दिमाग करके में ही है ये बात, लगाना क्योंकि चाहिए। आजकल तो लेंस कॉमन हो गया लगाना। नहीं, वो निकालो और लगा लो अंजन, तो वो और तो उसके बाद चालन सब करने के बाद परमानेंट शिफ्ट हो गया ना। कॉन्टैक्ट लेंस रख लो। शर्मा जी लेंस तो आपने आजकल लेंस परमानेंट लगवाया हो क्या गया, शर्मा जी? तो निकाल ही नहीं सकते। एक बार जो फिट हो गया बस परमानेंट के लिए फिट हो गया, तो आप बेटर आपने समझती लगवाया? हैं। आपने IOL लगवाया का शर्मा बोल जी रहे हैं लेंस? आप? हाँ? आपने लेंस लगवाया क्या शर्मा जी? अरे हाँ लगाया। IOL भाई IOL बुढ़ापा आ लगाने गया के ना, बाद अभी तो तो कर जवान सकते हम हैं, नहीं ना प्रॉब्लम है। नहीं है। आंख के ठीक अंदर है। वाला अगर लेंस है तो डाल सकते हैं अंजन। नहीं, अंजन अगर जो वाला ही है। कॉर्निया के ऊपर जो रिमूवेबल लेंस होता है ना, तो वो रिमूव करने के बाद ही अंजन करना होता है। अच्छा, लेजर ऑपरेशन के बाद? हाँ, लेजर करने के बाद भी आप कर सकते हैं, कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। हाँ, ऑल द बेस्ट। मैम इज इट ऑल्सो थैंक यू। मैम इज इट ऑल्सो कि अंजन में लेड इज हार्मफुल फॉर आईज? लाइक समटाइम्स हमारे आयुर्वेद में तो लेड अंजन्स हैं, बट इन मॉडर्न परव्यू इज इट हार्मफुल फॉर आईज लाइक लेड? वो मॉडर्न पीपल वाला जो प्यूरिफिकेशन है उसका कमेंट्स अलग है, और आयुर्वेद में जो रस वाले जो भी वैद्य होते हैं उन लोगों से पूछिए, उन लोगों का या जो हमारा जो प्यूरिफिकेशन मेथड है वो अलग है। हम यूज करते हैं पीबीएस, जो अंजन का जो शिला होता है ना, वो हम भृंगराज में शुद्धि करके, दैट इज आवर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, उसमें शुद्धि करके हम डालते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आते हैं, बट वी कांट कमेंट इट विद दैट ऑफ मॉडर्न प्यूरिफिकेशन। वी कांट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंज ना, वैसे। Yes ma'am, but anyways like US FDA या कोई वो they will just check for the lead content ना। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला, सी जब हम थीसिस एंड ऑल करते हैं, थीसिस करने के लिए जब कुछ टॉपिक निकालते हैं, तो जो भी प्रोटोकॉल्स है वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो उसको फॉलो करके करना पड़ता है। वी हैव टू चेक फॉर दिस कंटेंट्स एंड ऑल। हेवी मेटल्स का कंटेंट, उसका परमिसिबल ये लेवल, ये सब देके ही हमें करना पड़ता है। आई एम नॉट दैट मोर इनटू दिस रस शास्त्र एंड ऑल, तो उसका क्या कैसे करना है मॉडर्न वे में, इतना तो डिटेल में अगर जाना है तो वी शुड हैव अ डिस्कशन विद द एक्सपीरियंस्ड रस वैद्यास। Okay ma'am, thank you, great. ओके। एक डाउट है, इज देयर एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ अंजना एप्लीकेशन? अंजन अगर प्रॉपरली नहीं करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट होगा ही। वी शुड डू अंजना एज पर दूष्यम देशम बलम कालम मनलम प्रकृतिम वया।
सत्वं सात्म्यं तदाहारम् अवस्थाश्च पृथक् विधाः सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषा आरभेत तत क्रियाम्. The kriya, that is the treatment, or it can be Anjana, whatever it is, it should be done according to all, after assessing all these things. नहीं तो complication होगा ही, for sure. इसमें जनरल कॉम्प्लिकेशंस में मतलब जैसे इचिंग और वाटरिंग ऑफ आईज और या फिर इनसे अलग वो उसमें तो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्लासिकल टेक्स्ट में बोला है, वो हमें तो देखना पड़ेगा. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रावण पूरा नहीं होता है, तो हमें अगेन वो सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा. सी जो भी हम प्रोसीजर करते हैं तो उसका ना प्रॉपर एक वे में होता है, या अतियोग होता है या हीनयोग होता है. दैट इज अ जनरल थिंग ना. तो दैट कैन हैपन इन अंजना आल्सो. थैंक यू मैम. एक अनाउंसमेंट है, एज गाइडेड बाय डायरेक्टर मैम, it is requested to all the CRAV gurus to kindly share their topics for upcoming Gyan Ganga webinars. So please share your topics. Now, on the behalf of organizing committee, I would like to thank Dr. PRAVEENA P. Nair ma'am for delivering such insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor Vaidya Devendra Trigunaji, President GBRAV, for his continuous support, guidance and blessings. I thank our Director Dr. Vandana Sirva ma'am, who is the guiding force for all the events at the RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Kotecha ji, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all the endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars who, with their presence and active contribution and participation, make this webinar a successful one. Last but not the least, I thank each member of RAV organizing team who work behind the stage to make this event successful. Thank you, ma'am. Thank you all. Let me thank. Let me have the vote of thanks for all of you. Especially this CRAV is my home institution. जब मेरा PG complete हुआ, I started my higher studies with CRAV. तो मैं हमेशा सब जो भी टीम मेंबर्स है उसे तो हमेशा मैं बोलती रहती हूँ. मैं तो CRAV के लिए पहली बच्ची हूँ जो ये CRAV किया है, and it is the inspiration for me. उसके बाद जो रामकृष्ण सर एंड ऑल, वंदना मैम तो अभी मैंने देखा है, वो स्टार्टिंग जब मेरा CRAV हुआ था, रामकृष्ण सर was there, and I'm very thankful for all the team, like a home, for inviting me to this lecture. Actually ना I'm very excited. जब भी CRAV का कॉल आता है लेक्चर के लिए, I'll be very excited. कभी कभी ऐसे भी होता है कि पिछले दिन कॉल करके पूछते हैं आर यू रेडी, तो मैं हाँ आई एम रेडी. टॉपिक भी सोचा नहीं होगा, मैं तो ऐसे बोलती हूँ हाँ आई एम रेडी. तो आई एम दैट मच एक्साइटेड टू कम टू माय होम टाउन. क्या गुरु कौन थे आपके गुरु? भावदासन नंबूदिरी सर. भावदासन नंबूदिरी सर फ्रॉम इडूरी इल्लम. ठीक है. I am very thankful to all the team members. Thank you very much to one and all. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you all of you. Okay.